पोइट्री ले रहे हैं रोड साइड स्टैंड. दिस पोइट्री वॉज बींग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बड़े हाईली एक्लेम्ड पोइट है एंड he was born on 26 March 1874 in San Francisco, California. A date is not being mentioned in the NCERT. Okay. And when you look at his childhood, his father died at the age of 10 and thereafter his family shifted to England. He went to New England. Okay, where he did his schooling, and after that he was enrolled at a college, but he couldn't complete that. He left it. He has written several books in leisure time, and his first poem was in 1894. That was My Butterfly. Frost has written many things. He has written about people, about the landscapes and nature along with the people. He was always trying to connect both the things. Stopping by the woods on the snowy evening, bridges, mending walls. These are basically few well-known poems of Robert Frost. Roadside Stand is one of them. Basically, this poetry is about the rural people, the deprived one, who wants some city money, and for that, what they did, they made a roadside stand. In this particular poem, he simply described the vivid picture of a roadside stand. Basically, the poor people who wish to have some sympathy and some city money made this, and they want that some humanity might come to the city folks. But those city folks hardly bothered about it. This poetry also criticized the government. If you look at the next page of the NCERT, you will find that there is a criticism of the government as well. Okay, and the promises being shown by them, and what is the reality of those promises. The poet is also a keen observer of the things. He described in detail the life of the poor people and what kind of expectations they have from the city people. So this is the basic introduction of this particular poem, and now we are going to start it as per paragraph. Each para हम अब लेंगे, bilingual चलेंगे, और so that you can easily understand the things. Am I audible? Yes, sir. Okay. The little old house was out with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped. Simply, the old house, the house was there, the village folks where they are living on a place where what they did, they extend their house. They extend a part of their house and made a roadside stand. Okay, and the place, it is exactly near to the highway. जो हाईवे मूव कर रहा है उसके जस्ट पास में ही वो उसको एक्सटेंड करते हैं. A roadside stand. Name is being given, roadside stand. That too pathetically pled. It would not be fair to say for the dole of bread, but for some city
for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. Basically, the purpose of making this roadside stand is very clear. They are not expecting to get some bread, means they are not begging for bread and they are asking that if the people will buy, then only they will able to get some bread. But the fact was that they were just thinking, they had their thoughts that these people in the city are living a lavish life, a life full of energy and fragrance. So what they want that these people should stop and buy our things and give us some life which will help them to grow and flourish. To grow and flourish. They're not demanding bread from them. They are earning it with their living. They are demanding something extra. Okay. ये हमारा फर्स्ट पैरा यहां तक आता है. दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवर. यहां तक हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा, देखते हैं इसका. फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट. द पॉलिश ट्रैफिक. द polished traffic. This is very important. This line is very important. The polished traffic passed with the mind ahead. Or if ever aside a moment, out of the sorts, at having the landscape mad with the artless paint of the sign of N turned wrong and S turned wrong. These are the two signs being mentioned in it. N turned wrong and S turned wrong. Offered for sale. What they are selling in the roadside stand. They are not saying anything which is luxurious, which is not a basic necessity. They are simply selling what they can easily get in that locality, in that area. That is basically offered for sale wild berries in wooden quarts and crooked neck golden squash with silver bats. Or the beauty rest in a beautiful mountain scene. हम कॉमा है बेसिकली. वैसे दो लाइन के बाद पैरा खत्म हो रहा है. चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको. You have the money. This is very important. Make sure. This is very important. Very important. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? This is a question he is putting. He is criticizing the people and he is simply saying that you have the amount, but you don't have any willpower to help me by purchasing anything. This is what he believed. But इससे पहले हम पूरा पैरा समझते हैं. पॉलिश ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, रिच लोगों की बात कर रहे हैं. पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे रिच लोगों की बात कर रहे हैं. सीधा सीधा बात है. और वो क्या कह रहा है? They are moving ahead their destination in their mind. They hardly looked at the roadside stand which is artlessly painted. The word is artlessly painted. And the two next lines are N turned wrong and S turned wrong. These are the ways in which the paint is being done on that wooden structure. Suppose if this is a wooden structure, an extended part of the roadside stand, and they are being painting it artlessly without making any perfection. What they will do, either they will do like this or they will do like this. One can see the impressions of that on the wood. That is why these two words are being mentioned, and turned wrong and S turned wrong. And what they are selling? Two things they are selling. One is what? Wild berries, and other is a squash, a kind of vegetable basically. They are offering it. ठीक है. अब now they are offering it and nobody is buying. The rich people, the polished traffic is moving ahead with the mountain, with the scenery, with the landscape in their mind. And he is questioning, you people are having money, why don't you buy? What is the reason? Why you are keeping it along?
Why you are not buying anything? This is what he demand. Now, the next one, the heart of the scenery wouldn't be my complaint. The heart of the scenery wouldn't be my complaint. So much of trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand. देखिए, he is saying that कि भाई रोड साइड स्टैंड हमने बनाया, फार ऑफ प्लेस में बनाया, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी. एंड व्हाट इज आवर डिमांड? हम कुछ सिटी मनी चाहते हैं. हमने फर्स्ट पैरा में ही देखा था. दिस इज व्हाट ही डिमांडिंग, दैट मनी इन हैंड. एंड सॉरी, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स हो जाए, टू ट्राई इफ it would not make our being expand, and give us a life of moving picture promises, and that the party in power is said to have to be keeping from us. अब देखिए इस पैरा के अंदर he is simply thinking and demanding. भाई देखो, we have made a roadside stand. हमने इसको एक्सटेंड किया, हमने इसको बनाया, ठीक है, दैट इज ओके. ओके, हमने इसको पेंट किया जैसा हम कर पाए. द प्लाइट इज आपके सामने, कंडीशन है, हमें उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. फार अवे फ्रॉम द सिटी वी मेड इट ओवर हेयर, एंड वी आर थिंकिंग दैट वी कैन गेट सम एक्स्ट्रा मनी, सम एडिशनल मनी, एंड दैट मनी वुड हेल्प अस टू ग्रो. एंड they also want one thing, that government and the social service agencies should help them, because they have put up the money, they spend the money, so government should come and help them with the money and improve their condition. This is what he was demanding and hoping, basically not demanding, he was hoping this thing. अब देखिए this paragraph, the next paragraph is very important, बहुत important पैरा है. इसमें एक्चुअल क्रिटिसिज्म जो है सोसाइटी का किया गया है और गवर्नमेंट का किया गया है. इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. अब पिटिफुल किन की बात कर रहे हैं. पिटिफुल किन आर द रिलेटिव्स, पुअर पीपल who are being sympathetically treated. How they are treated? Sympathetically treated. And what is being done? They are taken together to a village where there is a theater and a store nearby where they are put up. जहाँ उन्हें रखा गया, बुला के रखा गया, sympathy दिखाई गई, वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे एक थिएटर है और एक स्टोर है. And further what happened? Where they won't have to think about themselves anymore, while the greedy good doers, beneficent beast of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. Where they are soothe them out of their wits, that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient ways. This paragraph is very important. The poet comes to know that all the poor people are being gathered by the agencies, the government agencies and the social service agencies. What the people did, they took them to a place, a village where there is a theater and a store nearby. Okay, they are being kept over there. Okay, and they have been promised that you need not to do anything. But the greedy good doers, those who people want to play on their life, swarm over life, what they did, they teach them how to sleep. The best way is to set an example on how to
डू द थिंग्स. तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, खुद सो के दिखाया उन्होंने. परफेक्टली सबसे अच्छा सिखाने का तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल देना. एंड आस्क दीज पीपल, एंड ask these people, who are these people, these poor people who are being taken away, to do the work, and they took over their life, and they have been living like a slave of an ancient time. This is how they taken over their life. Who are these greedy good doers? These are the agencies, these are the rich people, these are the one who brought them to that village. Okay. Now, the next paragraph. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longings in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all the day almost in open prayer. अब देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़. समटाइम्स कहता है आई कुडंट बियर, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट, आई हैव लॉट ऑफ थॉट्स विद मी. कैसे थॉट्स थे, चाइल्डिश लॉन्गिंग्स थी. यू लुक समटाइम्स यू फील दैट कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, एजम्पशंस ले लेते हो, होता क्या है नहीं, वो बाद में रियलाइज होता है यार ये तो वाई आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट. तो दीज आर द चाइल्डिश लॉन्गिंग्स. तो कहता है यहाँ क्या था बेसिकली, कहता है एक सैडनेस है जो उस विंडो, जो रोड साइड स्टैंड का एक साइड में विंडो है, वहां पर वो सैडनेस हर समय रहती है. क्यों? दे आर होपिंग समथिंग, दे आर वेटिंग समथिंग. व्हाट इज दैट वेट? कहता है ऑलमोस्ट एक प्रेयर की तरह वेट होता है. किसका? फॉर एन सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार. सीक्वल ऑफ ब्रेक एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार. दिस इज व्हाट दे प्रे, कि कोई गाड़ी रुके, उसकी आवाज सुनाई दे. एंड व्हाट हैपेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, for of all the 1,000 selfish cars, these cars are called selfish by the poet. क्यों? No one is stopping and helping him. That is why they called him. They passed away, they moved away without being stopping. That is why they were called selfish. Okay? And just to inquire, अब एक आध कार रुकती है तो क्यों रुकती है? Just to inquire what a farmer's price are. And one did stop, but only to plow up the grass. In using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. These are the questions they couldn't. This crossly they had none. Didn't it see? अब देखिए एक दो कार रुकती हैं, they have their own purposes. क्या पर्पस है? कोई रुका, कोई रुक करके जो है वो पूछता है भाई फार्मर्स प्राइस क्या है, यहाँ पे रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं. कोई गाड़ी को बैक करता है, प्लो करके ले जाता है ग्रास को, कोई आके रोकता है, पूछता है भाई व्हाट इज द वे, रास्ता कहाँ जा रहा है. देयर वाज नॉट गूगल एट दैट टाइम. जब ये बुक लिखी गई, गूगल मैप्स तो अवेलेबल नहीं थे, तो रास्ता लोगों से ही पूछ के जाया जाता था. तो दे यूज टू आस्क अबाउट इट, उससे पूछ लेते थे. या फिर लास्ट क्या पूछते थे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो होते थे, आस्किंग अबाउट द गैलन ऑफ गैस. क्या गैस भी मिलती है भाई हमारे यहाँ? ठीक है ना. अब दे कैन सी दैट देयर वर ओनली 2 थिंग्स इन द शॉप, इन दैट स्टैंड. हाउ कैन दे आस्क सच काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस? कहता है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सेंस बनता है भाई इसका, क्या है ये, व्हाट इज दिस? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? Then why they are asking? This is the simple complaint. And the last paragraph, most important paragraph of this poetry. No, in country money, country scale of gain. Pretty simple सी बात है. Nobody is going to help you out. Money you are having is being only spent to get some kind of satisfaction. बिना satisfaction के, बिना utility के, the word is utility, उसके बिना कोई पैसा खर्च नहीं करता. The requested lift of a spirit has never been found. किसी की help करना, no, there is no such option available. So, also the voice of the country seems to complain, I can help, owing a great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब basically people thinks
रूरल पीपल थिंक्स दैट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर हम पे होता ना तो व्हाट वी कैन डू, वी हम सबके दुखों को एक बार में दूर कर देते. बट ये सब सोचने तक पॉसिबल है व्हेन रियली यू हैव द मनी. यू नेवर एवर, इवन कोई लॉटरी भी लग जाए ना तो किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देते. यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट गेटिंग द रिटर्न्स. ठीक है ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे ये पॉइंट उसमें क्लियर किया. ये सोच रहा, ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. हाउ विल वी कम टू नो, कैसे पता चलेगा क्यों सोच रहा है ऐसा. नेक्स्ट लाइन आ रही है, एंड देन नेक्स्ट वीक एज आई कम बैक, and then next week as I come back into sane, the word is sane, I wonder how should I like you to come to me and offer to put me out of my pain. अब कहता नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक व्हाट आई रियलाइज्ड, कहता जब मैं सेन वापस सेंसेस में आता हूँ, अभी तक तो मैं इमोशनल चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि लोग मेरी हेल्प करेंगे. ठीक है, फिर मेरे को रियलाइज होता है यार नो, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. व्हाई एनीवन विल कम टू मी एंड हेल्प मी आउट. क्यों करेगा भाई, व्हाट इज द रीजन. कहता है आई नो इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है ना, आई वंडर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग. तो यहाँ आके उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई रियली अगर हम देखें तो कोई आपकी हेल्प ऐसे नहीं करेगा. अब हम इसकी बात करें तो पोएटिक डिवाइसेस की इसकी बात करें तो पर्सोनिफिकेशन आपको इसमें मिलेगी. ठीक है, कहाँ पे मिलेगी भाई, जहाँ पर पोइट कह रहा है ट्रीट्स द रोड साइड स्टैंड एज इट इज ए ह्यूमन. पर्सोनिफिकेशन मान के चल रहे हैं रोड साइड स्टैंड, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट दिया. अंडरलाइन कर लीजिएगा ये स्टेटमेंट बच्चों साथ साथ. यहाँ पे देख पैथेटिकली प्लेड वाला थर्ड लाइन देखिए पोइट्री की. रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. द पैथेटिकल कंडीशन इज बेसिकली जो है वो किस लिए दी हुई है, वो पैथेटिकल कंडीशन रोड साइड स्टैंड की है, बट यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसको पर्सनलाइज किया हुआ है. ठीक है, उसका सैडनेस की बात की गई ओपन विंडो के साथ में, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो. सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, सैडनेस इज देयर. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे वहां मिलेगा पर्सोनिफिकेशन आपको. ठीक है, उसके बाद देखिए दैट वेट्स ऑल डे, दैट वेट्स ऑल डे. अब विंडो वेट कर रही है पूरे दिन, कहता ना रिच मोट, उसकी बात करिए. फिर उसके बाद बात की पॉलिश्ड ट्रैफिक की. पॉलिश्ड ट्रैफिक की ये ह्यूमन एटीट्यूड दिखा रहा है रूरल की तरफ. इसके बाद मेटाफोर की बात करें तो इसमें मेटाफोर भी आता है इस पोइट्री के अंदर हमारे पास. मेटाफोर में क्या क्या आ जाता है भाई, मेटाफोर पॉलिश्ड ट्रैफिक और द फ्लावर्स ऑफ द सिटी, ये भी आ जाता है हमारे पास. ठीक है ना, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स दोज हु एक्सप्लॉइट द विलेजर्स पुअर पीपल, वो भी आ जाता है. एक और लाइन आती है सॉर्न ओवर देयर लाइफ, सेकंड पेज सेकंड पैरा 6th लाइन. ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं. इसके बाद एलिट्रेशन आ जाती है, इजीली आप लोग देख सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, साउंड्स आपको मिल रही हैं जैसे क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश. उसके बाद आपका सैडनेस दैट लग्स वाले में नियर एंड ओपन में निकल रहा है. विंडो ग्रीडी गुड डूअर्स के अंदर आपको साइन आ रहे हैं. बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे के अंदर आपके पास साउंड आ रहे हैं. तो ये बेसिकली छोटी छोटी है. इसके अलावा एनाफोरा वगैरह तो आप इजीली निकाल सकते हैं. दीज आर द बेसिक पोएटिक डिवाइसेस बीइंग यूज्ड इन दिस वन. आई होप दैट कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स और MCQs एक बार आप देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू.